studied in physiologist by for the mechanism and understand the regulation of sleep. Before going in much detail, first we want to discuss what is sleep. Sleep है क्या? Sleep is a state of unconsciousness, or you can say the semi-conscious state of mind. ये हमारे mind का एक state है जिसमें कि हम लोग unconscious और semi-conscious state में होते हैं. And how we know that it is the semi-conscious and unconscious state of mind? It is marked by immobility, that is the motor का movement नहीं होना, there is no or very less motor movement, as well as reduced responsiveness, means जो normal हमारा sensory stimuli है उसके लिए हमारा responsiveness कम हो जाना. This state of mind is completely reversible, and when we wake up, we will have the absolutely same active phase of our mind, और हमारा फिर से mobility और responsiveness जो है सो वापस आ जाता है. So sleep is basically a reversible state of unconsciousness and semi-conscious state of mind marked by immobility and reduced responsiveness. अब तो एक तरह से हमने दो बड़े चीजों में, दो बड़े स्टेट ऑफ माइंड में हमने अपने लाइफ को डिवाइड किया कि पहला अवेक स्टेट और दूसरा स्टेट दैट इज कॉल्ड स्लीप स्टेट. जब स्लीप को और डिटेल पढ़े गए, स्लीप के टाइम में हमारे ब्रेन में और हमारे बॉडी में और क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या इलेक्ट्रिकल चेंज आते हैं, तो ब्रेन के इलेक्ट्रिकल चेंज को जो स्टडी करते हैं दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राफी, ईईजी. जब ईईजी का डिस्कवरी हुआ फिर पता लगा कि जो हमारे ब्रेन में डिफरेंट टाइम ऑफ स्लीप में हमारे ब्रेन में अलग अलग चेंजेस होते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जो ईईजी के वेव्स में कैसे कैसे चेंजेस आए ड्यूरिंग द डिफरेंट ड्यूरेशंस ऑफ स्लीप, अकॉर्डिंगली स्लीप को दो बड़े स्टेजेस में डिवाइड किए गए. One stage is called rapid eye movement sleep and another is called non-rapid eye movement sleep. Although इसके अंदर आप देख रहे हो eye movement लिखा हुआ है, basically rapid eye movement sleep में patient is in deeper sleep, patient sleep में होता है लेकिन उसके आई बॉल रोटेट कर रहे होते हैं. एंड दिस स्टेज ऑफ स्लीप, दोनों ही स्टेट ऑफ स्लीप में ये देखा गया कि हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज चल रही होती है. इट इज नॉट ए ब्रेन मतलब कि जैसे एक नॉर्मल अवेक स्टेट में होता है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, बट उनकी ब्रेन की एक्टिविटी चल रही होती है. ये नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, इसको भी डिफरेंट स्टेजेस में डिफाइन किए गए हैं. फर्स्ट स्टेज जो कि स्टेज ऑफ ड्राउजीनेस, इट इज कॉल्ड NREM स्टेज 1. उसके बाद स्टेज ऑफ प्रोफाउंड स्लीप, जब मैं आराम से सो चुका है, दैट इज कॉल्ड NREM स्टेज 2. एंड थर्ड स्टेज इज कॉल्ड NREM स्टेज 3, बेसिकली स्टेज ऑफ डीप स्लीप. और उसी को ही एक्सटेंड करके स्टेज 4 तक पहले बोला गया था, बट नाउ ए डेज अब सिर्फ 3 स्टेज में बांटे गए हैं NREM को, N1, N2 एंड N3. पहले 4 तक माने गए थे, बट नाउ ए डेज रिसेंटली 3 एंड 4 स्टेज को मर्ज कर दिया गया. तो आप बुक्स में देखोगे तो कहीं कहीं पे आपको देयर आर 4 स्टेजेज मिलेंगे, बट 4 स्टेज जहाँ पे है वहां पे 3 एंड 4 इज मर्ज. ये डायग्राम, दिस इज कॉल्ड स्लीप हिप्नोग्राम. इस स्टेज इसको स्लीप हिप्नोग्राम बोलते हैं. हिप्नोग्राम मीन्स कैसे हम स्लीप में डिफरेंट फेजेज में डिफरेंट ड्यूरेशन बिताते हैं. यू कैन सी हियर, यहाँ पे 4 स्टेज 1, 2, 3, 4, दीज आर दी NREM स्टेजेज. एंड REM को एक डार्क कलर के बॉक्स बना के उनके ऊपर रखा गया. यू कैन नोटिस हियर, so that is called REM stage, and the awake is the different. So we have the 3 stages, that is one is called awake, NREM, REM. NREM is further divided into stage 1, 2 and 3, and sometimes 3 and 4, but 3 and 4 is merged together, so it is called 1, 2 and 3. So sleep के इस तरह से ब्रेन के वेव्स की और साथ में और क्या क्या फीचर्स हैं हमारे स्लीप बॉडी के. स्लीप के स्टडी को nowadays it is called as polysomnography. It is not the only EEG,
but along with that there are EMG, ECG, as well as electrooculogram, आई बॉल के मूवमेंट को भी, इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम, हमारे मसल्स के डिफरेंट मूवमेंट के, डायफ्राम का डिसेंट को, बहुत सारी चीजों एक साथ जोड़ दिया गया स्लीप की स्टडी के लिए. एंड दैट इन लैब्स, in the research labs, that study mechanism is called as polysomnography. So polysomnography is the study of the various activities including, it includes minimum, it includes EEG, it includes EMG from the different portions of the body, like chin से EEG लिया, EMG लिए जाते हैं, हमारे लिम्ब के मूवमेंट को देखने के लिए EMG किए जाते हैं. देन ECG, इसके साथ ECG भी ऐड किया जाता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोओकुलोग्राफी किए जाते हैं. सो इस तरह से इट इज द समेशन ऑफ ऑल द फोर और इवन मोर देन दीज एक्टिविटीज, एंड दैट इज कॉल्ड पॉलीसोमनोग्राफी. तो स्लीप का स्टडी अपने आप में काफी डिटेल स्टडी होता है. एंड we will read this chapter about the sleep and the different things when we read separately again the stages of sleep. अभी मैं इस पॉइंट पे छोड़ रहा हूँ सिर्फ आपको इतना इंट्रोड्यूस करके कि स्लीप होता क्या है, और स्लीप के दो ब्रॉड स्टेज हैं, REM एंड नॉन REM, और ये कैसे डिफाइन किए गए अकॉर्डिंग टू आवर EEG चेंजेस एज वेल एज द आई बॉल मूवमेंट, जिसको तो उसी को और भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव चेंज देखने के लिए nowadays the new modality of study called polysomnography is being done. Accordingly, तो जो हमने ये जो phases देखे कि stage 1, 2, 3 and then REM and again 1, 2 and 3. So इस तरह से there is this cyclic pattern occurs, and this whole cycle takes around 1.5 to 2 hours. 1.5 से 2 घंटे में एक साइकिल रोटेट कंप्लीट हो जाता है. ये आपने अभी हिप्नोग्राम में देखा होगा कि वन स्टेज ऑफ स्लीप इज कंप्लीटेड, यू कैन नोटिस हियर इन, एंड देन अगेन 1.5 से अगले 1.5-2 घंटे में एक दूसरा साइकिल और फिर तीसरा साइकिल. सो इस तरह से देयर आर द डिफरेंट साइकिल्स ऑफ स्लीप. और जैसे जैसे स्लीप थोड़ा लंबा चलता है तो बाद में ये ड्राउजीनेस वाला फेज थोड़ा कम होके और सीधा सीधा डीपर स्लीप, और एक टाइम आता है कि डीप स्लीप भी कम हो जाए और देन यू कैन सी कि वो सडनली नींद खुल जाती है REM से. तो REM इज द फेज ऑफ स्लीप इन विच ड्रीमिंग अकर्स. एक REM का फेज है जिसके अंदर ड्रीम होता है. सो बेसिकली द स्लीप साइकिल इज एन इंडिविजुअल बिगिंस विद द NREM स्टेज 1, then 2, 3 and then switches to REM, which is REM के फेज में ड्रीम होता है. कुछ लोगों को ड्रीम याद रहते हैं, कुछ लोगों को ड्रीम याद नहीं रहते हैं, कुछ लोगों को ड्रीम में डर लगता है, कुछ लोगों को ड्रीम के मतलब कि स्लीप के टाइम में डर लगता है, दैट इज कॉल्ड, वो याद रह जाते हैं, दैट इज कॉल्ड नाइटमेयर. कुछ लोगों को डर से नींद खुल जाती है लेकिन उन्हें पता नहीं होता, दैट इज कॉल्ड नाइट टेरर. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स ड्यूरिंग स्लीप, देयर आर सो मेनी फीचर्स of the characteristics of sleep that we will read in the separate chapter called sleep. But right now we are focusing in the regulation of sleep, so I am just rushing into the there are the different stages of sleep. यहाँ पे 3 स्टेज दिखाए गए. स्टेज 1 in which we experience a light transitional sleep. This is where drowsiness and sleep begins. Stage 2 is basically, it is a more stable sleep where the chemicals produced in the brain clog senses and making it difficult to awaken. Means एक तरह से stage 2 is a stable phase जहाँ पे कुछ chemicals release होते हैं हमारे brain में, और जिसकी वजह से बेसिकली ये हमारे स्लीप प्रमोटिंग केमिकल्स होते हैं. इन केमिकल्स को अलग अलग ग्रुप में बांटे गए हैं. दीज आर बेसिकली कॉल्ड हाइपोक्रेटिन्स, और उनके भी बाद में आइडेंटिफाई किए गए कि स्लीप रिलेटेड, like they are GABA and ghrelin. These are the neurotransmitters which are released during the sleep. Then stage 3 is a deep sleep. और आप लोगों ने स्लीप को आपने अभी कुछ दिन पहले ग्रोथ हार्मोन के रेगुलेशन में आपने पढ़ा होगा कि जो ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करता है यदि हम सोते हैं तो अच्छे से. सो इसलिए बचपन में यदि कोई अच्छा से सोता है तो इट इज उनका ग्रोथ हार्मोन्स का ज्यादा सिक्रीशन होता है. Growth hormone is released during this stage of sleep. Stage 3 means जितना ज्यादा deep sleep होगा उतना बेटर होगा उसके लिए ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होना.
मोस्ट स्टेज 3 स्लीप अकर्स इन द फर्स्ट थर्ड ऑफ लाइफ, मींस कि जब हम नींद पढ़ते हैं उसके शुरुआती फेज में ही, शुरुआती 2-3 घंटे में ही हमें स्टेज 3 ज्यादा मिलता है और बाद में धीरे धीरे स्टेज 3 कम होता चला जाता है. Then REM sleep, it basically revitalizes the memory. In this stage, the brain activity is very high and intense dreaming occurs. So basically, these are the stages of sleep, and these stages are basically repeating in itself. That's why it is called as basically a sleep cycle. We will read the more details about the characteristic features of the REM and NREM different stages इन आवर चैप्टर ऑफ स्लीप, जहां पे हम आपको ईईजी के बारे में पहले पढ़ाएंगे. देन वी विल रीड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर और द चेंजेस इन द स्लीप ड्यूरिंग आरईएम एंड एनआरईएम. सो ब्रेन इज वेरी एक्टिव. यू कैन सी हियर, यहाँ पे राइट साइड में जो ये आपको इमेज दिखाए गए, दीज आर द ईईजी चेंजेस. ये ईईजी चेंजेस दिखाए गए हैं कि अवेक टाइम में कितना ज्यादा इंटेंस एक्टिविटीज होते हैं, बट जैसे जैसे हम सोने के लिए जाते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम हो जाता है. बट ऑल्दो द एम्पलीट्यूड बिकम्स लार्जर बट फ्रीक्वेंसी बिकम्स वेरी स्लो. बट व्हेन द सेम पर्सन गोज इनटू द आरईएम स्लीप, यू कैन सी द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस. इट इज नियर अबाउट द सेम लाइक द अवेक, एंड दैट्स व्हाई आरईएम में पर्सन को जगाना मुश्किल है, नींद ज्यादा गहरा है, बट स्टिल ब्रेन की एक्टिविटीज ऐसी है कि वो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि वो अवेक है. तो जब कोई स्लीप स्टडी की जाती है उस टाइम में ये चीज बहुत इसेंशियल होता है कि टू डिफरेंशिएट बिटवीन द पर्सन इज अवेक और इन आरईएम और इन द अदर स्टेजेस. एंड इसी वजह से आरईएम स्लीप को पैराडॉक्सिकल स्लीप भी बोला जाता है. पैराडॉक्सिकल स्टेज, पैराडॉक्सिकल इसलिए क्योंकि देखने में लगता है कि आरईएम ईजी चेंजेस को देखने में ऐसा लगेगा कि इट इज जस्ट लाइक अवेक, बट जब आप उसे जगाने की कोशिश करोगे तो ही इज नॉट अवेक. बेसिकली ही इज वेरी डिफिकल्ट टू अवेक. एंड इन द डीपर स्टेज एंड द डीपर स्लीप इट इज आल्सो देयर इज वेरी डिफरेंस. यू कैन सी कि ये भी डीप स्टेज है स्लीप का, इसमें भी नींद गहरी है, इसमें भी नींद गहरी है, लेकिन ब्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स में काफी डिफरेंस है, ब्रेन के वेव्स में. These we will study this again in the chapter. The brain is very active during REM sleep, characterized by dysynchronous neuronal activities, whereas brain goes through the periods of synchronized neuronal activity during NREM sleep. So dysynchronous and synchronized we will read in the EEG changes. Coming to the regulation of sleep. Sleep को रेगुलेट करने के लिए दो डिफरेंट मैकेनिज्म्स, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म आइडेंटिफाई किए गए हैं. पहला मैकेनिज्म, फर्स्ट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज सर्कैडियन रिदम मैकेनिज्म, एंड सेकंड इज कॉल्ड एज द स्लीप वेक होमियोस्टेसिस. मींस सोने का एक पर्टिकुलर टाइम होने पे हमारे बॉडी के खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे बॉडी के खुद के केमिकल चेंजेस, हमारे टेम्परेचर चेंजेस, योर वाटर डिमांड, these are basically balanced according to our sleep and wake, that is called homeostasis. And our brain itself has a clock that determines that this is the time to sleep or this is not time not to sleep. So that is called the circadian rhythm. These two mechanisms work together to regulate where you are now, when you are awake or sleep. So sleep को regulate करने के दो mechanism है. One is called circadian rhythm mechanism, another is called sleep wake homeostasis. Circadian rhythm is a characteristical feature of basically our hypothalamus, because we are reading in the chapter of hypothalamus, but I am taking it much detail about this chapter, that is regulation of sleep. So हाइपोथैलेमस के अंदर सर्कैडियन रिदम वाला जो काम है इसका बहुत ज्यादा रोल है. इवन स्लीप वेक होम्योस्टेसिस में हमारे सारे बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम्स as well as the other system like cardiovascular and GIT, these all are involved in the managing the homeostasis during sleep and wakefulness. First, coming to the circadian rhythm. Circadian rhythm directs a wide variety of functions from daily fluctuation in wakefulness to body temperature, metabolism and release of hormones. So this is called circadian rhythm कि हमारा बॉडी के अंदर डेली ही फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बॉडी टेम्परेचर में, मेटाबॉलिज्म में, रिलीज ऑफ हार्मोन्स में, ऑटोनॉमिक फंक्शंस में. दे कंट्रोल आवर टाइमिंग ऑफ स्लीप एंड कॉज अस टू स्लीपी एट नाइट एट अ पर्टिकुलर टाइम. जैसे 9-10 बजते बजते नींद आ जाती है. सो दैट टेंडेंसी टू स्लीप इज बेसिकली
depending upon the clock, a clock basically, that is a hypothetical clock. That clock is, and morning होने के बाद without alarm में भी हम लोग कितने बार उठने की tendency हो जाती है. So that is called the circadian rhythm. We will read about the more details about the how the circadian rhythm is regulated in the just after this topic, just after the regulation of sleep. Another mechanism is called sleep wake homeostasis. It track our need for sleep. वहां पे क्या था, टाइमिंग के हिसाब से अपने आप स्लीप हो जाता है. यहाँ पे नीड है, स्लीप की नीड क्या है, स्लीप का नीड है अपने आप को रिफ्रेश करना, कि पूरे दिन एक्टिविटी करने के बाद हाउ वी गेट रिफ्रेश्ड फॉर द आवर नेक्स्ट डे एक्टिविटी, for revitalize, or you can say the re-energize yourself. So homeostatic sleep drive reminds the body to sleep after a certain time and regulates the sleep intensity. कोई कोई दिन हम ज्यादा काम कर लेते हैं, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, तो हमें डीप स्लीप जल्दी आ जाता है. और कोई कोई दिन यदि हम दिन भर बिस्तर पे पड़े ही हैं, यदि हम टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो हमें उस टाइम उस दिन जल्दी नींद नहीं आती है. ऐसा इस तरह से ऑब्जर्व किया जाए, डिपेंड्स अपॉन कि हमने कैसा बॉडी हमने किस तरह से मैनेज किया. सो दिस इज कॉल्ड होम्योस्टैटिक स्लीप ड्राइव. स्लीप ड्राइव गिव्स स्ट्रॉन्गर एवरी आवर यू आर अवेक. जैसे कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप कितने हर घंटे आप जैसे जैसे जगे रहते हो, एंड कॉजेज यू टू स्लीप लॉन्गर एंड मोर डीपली आफ्टर ए पीरियड ऑफ स्लीप डिप्राइवेशन. जैसे किसी को यदि होल नाइट यदि जगे रह गए, तो अगले दिन जो है सो आपका स्लीप ड्राइव जो है, या मतलब कि मॉर्निंग हर घंटे उसका आपका जो है सो स्लीप का वो ड्राइव और बढ़ता चला जाता है. सो दिस इज कॉल्ड द स्लीप वेक होम्योस्टैसिस. These two mechanisms, circadian rhythm and sleep wake homeostasis, both are correlated with each other. And एक particular time आता है जहाँ पे you can see the homeostatic sleep drive. So it is basically at the daytime, at the morning daytime, there is very less homeostatic sleep drive, and circadian rhythm signals. These are जैसे जैसे evening होता जाता है हमारा धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है. This is a very hypothetical, but sometimes it has been observed that the people can sleep also in the daytime, in the afternoon after lunch. So ये भी चीजें देखी गई है, ऑब्जर्व की गई है, but this is basically a fixed pattern. And इसको मैनेज करने के लिए सर्कैडियन रिदम का सिग्नल है, that is called suprachiasmatic nucleus of hypothalamus. They manage our, and there is another one hormone that is called melatonin, that is important for our sleep wake cycle. मेलाटोनिन एक पर्टिकुलर टाइम में हमारा ज्यादा सिक्रेट होता है, जो कि पर्सन को जगा देता है एक टाइम में. इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम pineal gland that manages our wakefulness stage और हमें एक्टिव रखने के लिए. मेलाटोनिन का यूज किया जाता है एज ए ड्रग के तरह भी आजकल यूज किए जाने लगे हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ जेट लैग, और इसके और भी बहुत सारे डिटेल्स स्टडी किए गए हैं. इसको तो आजकल बहुत सारे मेटाबॉलिक हार्मोन्स में के तरह भी यूज किए जा रहे हैं. So this you will learn in the higher classes. So there is the sleep and wakefulness. It is having the two different system in our body. One system is called the arousal activating system, जो हमें जगा के रखने वाला सिस्टम, और दूसरा सिस्टम है that is called sleep promoting system, जो हमें सुलाने के लिए मदद करता है. So that arousal activation system and the sleep promoting system, these are the two systems in the body which are basically. So sleep and wakefulness are managed by the two system in our nervous system, in our brain. One is called arousal activating system and another is called sleep promoting system. एक सिस्टम को arousal activation system और दूसरे को sleep promoting system बोला गया. And when we see the characteristic changes in the different portions of the brain, it has been observed that arousal activating system are present in the brainstem, in the thalamus and hypothalamus, whereas the sleep promoting system has been observed only or solely in the hypothalamus. Sleep promoting system, जबकि arousal activating system हमारे ब्रेन के डिफरेंट पोर्शंस में अलग अलग जगह पे ऑब्जर्व पाए गए हैं, but sleep promoting system are mainly present in the hypothalamus. And now you can correlate with the functions of hypothalamus for managing the sleep and wakefulness. There is another thing that I just right now told you, that about the suprachiasmatic nucleus. It is the managing the circadian rhythm. So the sleep promoting and sleep and wakefulness managing systems, that is called the
arousal activating and the sleep promoting systems. These are present in the different portions of the brain. They, according to their chemicals released from their different portions, and these chemicals like the awake के लिए जो chemicals हैं like they are acetylcholine, histamine, dopamine, serotonin, norepinephrine, and these chemicals they manage our the cerebral activities into the in such a manner so that it is for managing our the wakefulness. Similarly, जो chemicals हैं inhibitory neurotransmitter like GABA, and another one is called galanin, is a new chemical that is amplified. These are inhibitory for the various systems of the cerebral cortex and which are basically important for the awakening. And वो सारे system यदि cut off हो जाए, जैसे हमारा sensory और motor cut off हो जाए, तो our brain will go in a stage of sleep. So इस तरह से sleep manage होता है. So ये जो arousal activating system and sleep promoting system, these are behaving like a switch, and this is called as flip-flop mechanism of sleep. This is the diagram. This is the diagram showing you the different portions of brain. In that you can see the various portions of the brain which are involved in the sleep wakefulness. You can notice here there is one very important thing is the thalamus, that is important for the cortical activations, that we know that there is the thalamocortical oscillations are going on for managing the various relay information, sensory and motor information from thalamus to cortex and cortex to the different ports, and from thalamus to the different portions of the cortex. They manage the cortical activation and EEG के अंदर ये इनके वजह से sleep के time में थोड़े बहुत changes इस तरह से आते हैं, that is the EEG में कुछ एक typical features आते हैं हमारे stable phase of sleep में, and that is called sleep spindles, and EEG waves become synchronized due to the thalamocortical oscillations. Another important structure is the hypothalamus, which are having so many components. I just now told you that the VLPO, that is the ventrolateral preoptic nucleus of the hypothalamus, the VLPO, this is basically the sleep promoting center, and there is another nuclei called suprachiasmatic nucleus, which are managing the circadian clock in our brain. So the sleep-wake cycle is very much in control of the diencephalon, basically the thalamus and the hypothalamus. Along with that, awake को maintain रखने के लिए, और there is one ascending reticular system that is there are from the brain stem, and basically the medulla में जो ascending reticular system है वो activate होकर के हमारे brain को active रखता है. Similarly, pons में भी sleep REM sleep activation और control center, and there is the forebrain bundles. This is basically the area of the forebrain which are also involved in the sleep. So ultimately we have the four important areas. Thalamus, hypothalamus is one. You can say the diencephalon, there is the pons, there is the medulla, and there is the forebrain. So there are the four interacting neural systems that underlie sleep and wakefulness. Number one is the forebrain system that by itself can display the slow wave sleep. Slow wave sleep का meaning होता है deep sleep. तो ये deep sleep के time में ये वाला जो portion है that is basically forebrain जो है वो ज़्यादा involve होते हैं. Then brain stem system that activates the forebrain into wakefulness. This brain stem system is basically the medulla and the pons. And यहाँ पे ये basically ascending reticular activating system के बारे में बात किया गया, जो कि हमारे forebrain के साथ direct contact में है और जो कि हमें wakefulness में manage करता है, बना कर रखता है. Pontine system वो trigger करता है REM sleep के तरफ shift करने को. So there is the pontine system जो कि REM sleep activation and control करता है, and thalamic and hypothalamic system that affect the other three brain regions to determine whether the brain will be awake or asleep. So इस तरह से there are the four interacting systems in our brain which underlie the sleep wakefulness. And as I told you that there is a flip-flop circuit, that is the two sets of the mutually involuntary components. Other than this, that is, these are the components for the sleep.
ये बता रहे हैं कि जो देयर आर द स्लीप प्रमोटिंग सिस्टम एंड द स्लीप इनहिबिटिंग सिस्टम. So sleep side, that is the sleep promoting, is the ventrolateral preoptic nucleus of hypothalamus. So ventrolateral preoptic nucleus of hypothalamus, this is mainly the sleep promoting system. And arousal system has been identified as the tuberomammillary nucleus, that is TNM nucleus. Tuberomammillary means tuberal region of the hypothalamus or the mammillary region. इन दोनों के combined को के बीच का जो region है, that is called tuberomammillary region. It is histaminergic. Another region is that is the brain stem arousal regions. Basically the dorsal raphe nucleus present in the midbrain. It is the serotonergic. Then ventral tegmental area. Ventral tegmental area is basically ventral tegmental area, that is also for the important for the arousal side. It is VTA, is the dopaminergic, and the fourth one is the locus coeruleus. It is the noradrenergic. So these are the different areas for the arousal side. जो sleep promoting side और sleep both है, तो इस तरह से you can see one is the sleep promoting, another is the arousal promoting. अब इन दोनों के बीच में flip flop होता है, that is called. So each side of, that is the arousal side or sleep side, they inhibit each other. And this is basically the arousal side. ये arousal side को बताने के लिए ये दिखाया गया है. यहाँ पे you can notice here the TNM, the locus coeruleus, the raphe nucleus, and these are their chemicals has been shown. Then there is the periactive ductal gray matter. Then other portions are in pontine nucleus. These are for the. So there are so many places. The key elements of the ascending arousal system with diffuse excitatory projections to the cortex. और यहाँ से जो है सो ये cortex को diffuse signal देते हैं, जिसकी वजह से जो है सो arousal manage रहता है. So ultimately you can see whenever the sleep promoting stage is inhibited, so that is called the flip flop is on. जो sleep promoting region जो ventrolateral preoptic nucleus of anterior hypothalamus, तो जब ये एक्टिव रहता है तब जो है सो हमारा बेसिकली तो ये एक्टिव रहेगा और सो ये इनहिबिटेड रहेंगे जिस टाइम में, उस टाइम में रिलेटिवली ये वाला जो पोर्शन है जो कि अवेक मेंटेन करने वाले हैं, जो कि एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन और डोपामिन, ये सब जो सीक्रेट करते हैं. So these are basically the alert awake systems. So you can see here, this is called flip flop is on. So when flip flop is on, it means the sleep promoting region in the VLPO, that is basically inhibited, and at the same time the activated is the alert awaking state, that is by the brain stem and forebrain arousal systems. They release the neurotransmitters. Another time when the flip flop is off, जब फ्लिप फ्लॉप ऑफ होते हैं तो दे जो स्लीप प्रमोटिंग जो है वो वाले एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि वीएलपीओ में, और जो दूसरा है जो अराउजल वाले हैं वो इनहिबिट हो जाते हैं. सो जो अराउजल सिस्टम है ये गेट इनहिबिटेड, सो द न्यूरोट्रांसमीटर्स आर नॉट रिलीज्ड व्हिच आर मैनेजिंग द and the person goes in the sleep easily. So this is basically the flip flop. So the previous one, it is when the awake state, and another stage when there is the deep sleep state. REM के टाइम में, REM sleep के टाइम में another system में activate होता है. I told you that before that there is a pontine nucleus, they also get activated. We will read that again when we read about the chapter of sleep. So when the activation of one side is slightly stronger, the weaker side increases the inhibition, thus further tipping the balance towards the stronger side. So this flip-flop switch allows for the rapid state transition. So sleep or wake को manage करने के लिए, that is called flip-flop mechanism. So it is just like the switch. एक तरफ से ये switch यदि on होगा तो awake होगा, एक तरफ से यदि वो off हो गया तो basically sleep होगा. So यही चीज को यहाँ दिखाया गया, that is called you can notice here the sleep wake promoting activities and the sleep promoting, and which is basically कौन सा वे ज्यादा इसमें एक्टिव है और कौन सा इनहिबिटेड है, accordingly that stage comes. So in this you can see when the awake is there and when there is the release of the GABAergic ये, तो ये जो sleep promoting side है तो the person is going to sleep. And just opposite when the wake promoting, so this is called the flip flop model of sleep and wakefulness.
This model is a recent model of the sleep and wakefulness. You may not get in the few of the books where it is much details is not given. So आप लोगों के लिए ये मैंने काफी detailed information दिए हैं. But these things you will learn in higher class. There is another thing that you will learn is the role of hypocretin. There is another molecule that is called the sleep molecule. ये हाइपोक्रेटिन ये हमारे पोस्टेरोलैटरल हाइपोथैलेमस में रिलीज होते हैं and these are active during the wakefulness and project to all the wakefulness arousal systems, and they interact with both the sleep inhibiting and the sleep promoting system and acting as a stabilizer between the wakefulness maintaining and the sleep promoting system to prevent the sudden and inappropriate transition between the two systems. In this way, the sleep and wakefulness are managed, and these are the few important characteristic features. काफी फास्ट गया हूं मैं, काफी तेजी से